Dear students, growth rates are very interesting and useful in economic analysis. What if we have to calculate the growth rate of a function and a variable that is not simple, rather it is a compound function? In other words, what we are trying to say is that if the variable is composed of other variables, then it is slightly difficult to calculate the growth rate. How we can do that? Let us see with the help of an example. We are considering the example of exports, and within the exports we are assuming that there are goods that are being exported and there are services जिनकी exports की जा रही हैं. So goods की exports को हमने G से show किया और S से show किया services की exports को. And then we are assuming that both of them, they are a function of time, because over time exports, चाहे वो goods की हो चाहे वो services की हो, they change. So now we can sum them up, we can get the total exports. And exports को total way में हमने express किया using the notation of X, which is also in terms of T because total is also dependent upon time. And this is the sum of the G and S variables. Now, rate of growth of exports can be found by using this formula. And this formula says that we need to, take the derivative of that function, and we also need to divide it with that function. So, firstly, we are taking the derivative of that function. And we know कि xt की value ये है, so हमने उसकी जगह इसकी value को substitute किया. और उसके बाद, using the sum rule of differentiation, because two functions are being added and we have to take their derivative. So we have expanded, हमने expand करके लिख दिया है, and in the next step हम इनको इनकी derivative notation में लिख रहे हैं. So we have to take the derivative and the answers will be written here. This is not a numerical example, therefore आपको numerical answers नहीं नजर आ रहे, हमने functional form में ही इस answer को reveal किया. So substituting in the Rx, हमने Rx की जो value बनती है हमने वो यहाँ पर use की. आप देख सकते हैं कि ये जो value है it is substituted here, right? So once I have this expression, I can simplify it. I can expand this expression. X को हमने दोनों variables के bottom में denominator में लिखा. After this, I can sense that I can develop something meaningful, and that meaningful thing is कि S का growth rate और G का growth rate. जिसके लिए growth rate के लिए we need to have the derivative in the numerator और डिनोमिनेटर में हमें वो फंक्शन खुद लिखना पड़ता है. तो उसके लिए मैं थोड़ी सी मैनिपुलेशन करूंगा इस स्टेप में. आप देख सकते हैं हमने इस फंक्शन को जी से तकसीम और जी से ही ज़रब किया और एस से किया यही प्रोसेस दूसरी वाली टर्म को. और उनको हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया. तो आप देख रहे हैं कि ये जो टर्म है और जो ये टर्म है ये बेसिकली ग्रोथ रेट शो कर रहे हैं. ये गुड्स की एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ रेट और ये सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ रेट. सो इस थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करने से वी हैव फाउंड द ग्रोथ रेट ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ रेट्स of the exports of goods and the exports of services. So now this is a nice looking formula, and we can also find the numerical values if we have them. So we don't have the numerical values but symbolic values हमारे पास हैं, हम उन्हें substitute कर सकते हैं. RG की जगह आपने देखा हमने value की substitute और RS की जगह भी हमने substitution की. इसे हम consolidate करके इस तरह लिख सकते हैं. So in this way, we have learnt how to get the growth rate of a variable which is, composed of more than one variables. And in this case, this is the sum of two variables, that is growth of goods and growth of services. Thank you.